Hello and good afternoon, everyone. Welcome to a very, very happy Saturday. I'm Vaishnavi, and this is the Hindu editorial analysis of the 27th of May, that is today. Uh, I hope you can see and hear me. Hey, hey, Alpesh, hello, Truranga, hi, Ria, hi. Salutations, Ivan, Vedika, good afternoon. Gorika, hi, hi. The story of my life. Baby, running around, is like chasing the sun. Hi, Ashant. Hi, Aditya. Hi, Christy. Good afternoon. Hi, Ujjwal. Hello, everybody. Hello. How is your Saturday going? With worrisome, मैम कल मेरा CUET का पेपर है. Gaurika, all the best, all the very, very best. Namaste. Namaste, Triranga. Namaste. So can we get started? How is it looking for everyone? Can we get started? आज बहुत सारे words हैं. We have a ton of vocabulary today again. So let's get started. हफ्ते में 4 शनिवार होने से हफ्ते में 4 शनिवार नहीं होते क्या? Best of luck, guys, for your exam. Oh, nice as well. Thank you for wishing all the other students, and I am also wishing from my side all the very best. And may the force be with you, all of you all. All right, let's get started. Can we get started then? त्रिरंगा अल्पेश और निशिता कहाँ है और ईशांत कहाँ है? ईशांत कहाँ चला गया? आया तो था. ईशांत है? Hi Vaishnavi. Hello. It feels so good to call my own name and say hello. Okay, Ishant is there. Vedika is here. All right. So, hello Manisha. Hello Sharva. Hi, good afternoon. All right, so let's get started with today's editorial. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम 27th का कौन सा editorial करने वाले हैं? Any guesses? I'm sure you will be able to guess it by now. अभी तक newspaper तो आपने पढ़ ही लिया होगा. By now, ideally, you should have read the newspaper. Yes, Alvar, absolutely, absolutely, Triranga. That's what we are going to be doing. Let's get started. All right. This again, every single day. And then, mm, this jigming will take some time. Don't worry, but I will get it sorted. All right. Huh. There you go. All right, so if you have not joined my Telegram channel yet, now is it is high time that you do, because on the Telegram channel is where we are
doing one reading comprehension, one phrasal verb, and one idiomatic expression, all in the form of quiz or in the form of classes. We are doing this on a daily basis. Apart from this, you get to know about my schedule and change in schedule. Like आज की class 2 बजे होने वाली थी, फिर 3 बजे हो गई. So if you want to know about all the notification and changes of my class, happenings of my class, and if you want to have if you want to ask something, you can definitely join the group and become a part of this family where you can talk anything that you want. Okay, uh, barring a few things, right? Because political correctness is required. राइट सो अगर आपको नहीं मिल रहा है ऐसे मेरा चैनल अनअकैडमी अंडरस्कोर वैष्णवी अंडरस्कोर क्लैट करके नहीं मिल रहा है तो यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड एंड इट विल टेक यू स्ट्रेट टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स टुडे आर रिलेटेड टू लीगल मैटर्स सो यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दीज वर्ड्स बिकम राइट and I'm feeling blue da 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 culpable. So the first word that we have is culpable is an adjective. ये word हमने पहले भी किया है, but we are going to be doing it again. Okay, culpable का मतलब होता है deserving to be blamed or considered responsible for something bad. Okay, so he is culpable in the crime. That means he is deserving of the blame in this crime. Right? तो culpable अगर मैं बोलूँ किसी को तो उसका मतलब क्या होता है कि उस पे blame जाना चाहिए. Okay, he deserves the blame. Okay, अगर कोई कुछ कर रहा है और कोई एक इंसिडेंट हो जाता है जिसके लिए आप किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो ओके तो दैट पर्सन बिकम्स कल्पेबल of the incident or the crime or whatever that person or the action that person has done. Okay, all right. Then we have lynching. Lynching is also mob lynching. आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा and this word is very very important. High frequency word है and it is used very often. Okay, so lynching is basically the act of killing someone without a legal trial, usually by hanging. Okay, usually. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी को मार दिया जाता है बिना लीगल ट्रायल के. ओके सो जनता अगर गुस्से में है किसी की तरफ और जनता मार देती है किसी को. ओके सो दैट इज लिंचिंग. ओके मॉब लिंचिंग. ओके व्हेन समवन गेट्स एंग्री ऑन समवन एंड द एंटायर there's a crowd of people जो किसी पे किसी को मार रहे हैं और मारते मारते उसे मार ही देते हैं. ओके दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लिंचिंग एंड देन यूजुअली बाय हैंगिंग या तो फांसी लगा देते हैं. नॉट बाय लीगल ट्रायल. ओके लीगल ट्रायल नहीं होता है उनका कोई कानून नहीं होता है यहाँ पर बस एक्ट ऑफ किलिंग है विदाउट अ लीगल ट्रायल यूजुअली हैंगिंग यूजुअली. ओके अंडरस्टैंड यूजुअली इज नॉट ऑलवेज. ओके यूजुअली इज नॉट इक्वल टू ऑलवेज. ओके तो हर केस में नहीं लेकिन यूजुअली ऐसी केस होता है कि उन्हें फांसी लगा देते हैं वो. ओके सो लिंचिंग नाउ ये एक जेरेंड है. ओके जेरेंड्स आर बेसिकली ग्रामर में अगर देखो तो जैसे साइकिलिंग है राइट व्हेन यू टॉक अबाउट साइकिलिंग तो साइकिलिंग इज द नेम ऑफ द एक्टिविटी राइट आईएनजी आ रहा है लेकिन भी ये नाम है एक्टिविटी का राइट इट इज नॉट एग्जैक्टली द वर्ब फॉर्म आईएनजी के बावजूद ये वर्ब फॉर्म नहीं है. सो दीज वर्ड्स जो आईएनजी के साथ नाउन का रोल प्ले करते हैं दे आर कॉल्ड जेरेंड्स. ओके बट आई हैव गिवन इट नाउन बिकॉज लिंचिंग आईएनजी के साथ भी it is a noun right so you cannot use it as a verb. Okay you have to use it as a noun. ing hota hai. Okay sorry same goes for swimming right swimming cycling any activity you take with the ing form wo naam hai us activity ka right it is not the verb form action nahi dikha raha hai when you say I'm going cycling I'm going cycling yahan par going is the verb and cycling is the noun right Jaren all right now understand culpable is नेगेटिव. ठीक है कल्पेबल कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता. व्हेन यू से दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल आई एम कल्पेबल फॉर योर क्लासेस sorry but you are culpable of murder. Ooh, that is fine. Where are the sentences everyone where are the sentences I don't see sentences. Ooh.
All right. So let's start making sentences, everyone. Why is nobody making sentences? Very less. Hivan is making. Hi, Hivan. Hivan, Nishita. Sorry. Okay. नेक्स्ट इज होमिसाइड. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है. होमिसाइड इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. आई टेल यू व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग. ओके, बिकॉज जितने भी वर्ड्स CIDE से एंड होते हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू किलिंग. ओके, CIDE अगर प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स यूज हो रहा है तो इसका मतलब किल होता है. सो यू हैव homicide, insecticide, pesticide, feticide, regicide, genocide, patricide, matricide, sorocide, urexocide. All these sides are related to killing. Okay, so every side is related to killing, remember that. And homicide, homo और side का combination है, right? So if you have homo का मतलब क्या होता है? Same. So killing of the same kind is called homicide, right? Killing of the same kind is called homicide. Okay, so homo is same, like homogeneous, homosexual, and homicide. Okay, so यहाँ का O drop हो जाता है when it combines with ICIDE. Okay, so but इसमें prefix home, homo, and suffix side. It's a combination of that same kind killing. Okay, so that is homicide. So the unlawful killing of one person by another. Okay, मतलब कोई law की तरफ से permission नहीं मिला उसे मारने का, right? So basically, murder is homicide. Okay, in the sense, murder is homicide in the broader sense, right? All right. Then we have nuanced. Nuanced is an adjective. Nuanced is an adjective made slightly different in appearance, meaning or sound. थोड़ा सा different कर देते हैं. Okay. Nuanced is slight changes that you are making. कोई भी थोड़ा थोड़ा changes अगर आप किसी चीज में कर दें, ये उसके meaning में थोड़ा change कर दिया, या उसके sound में change कर दिया, या उसके appearance में थोड़ा सा कुछ change कर दिया. So you say she came to the party with a nuanced appearance. Okay, nuanced appearance, that means slightly different appearance. Okay, all right. Acquitted, acquitted भी बहुत important word है. All these words are very 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 important. Okay, so acquitted का मतलब क्या होता है? It is a verb, acquit, right? Ed बाद में लगता है, it is the past form, लेकिन the word is acquit, right? Acquit का मतलब होता है free someone from a criminal charge by a verdict of not guilty. किसी को भी acquit कर देना. A person being acquitted is a person जिसको बाइज्जत बरी कर दी जाती है, जिसको नॉट गिल्टी बोल दिया जाता है. ठीक है, दैट इज अक्विटेड ऑफ अ क्राइम. सो ही वाज अक्विटेड ऑफ ऑल क्राइम्स. ओके, सो दैट मीन्स उसको सारे चार्जेस से, जितने भी क्राइम के चार्जेस से उसको फ्री कर दिया गया, राइट? दैट इज अक्विटेड. ये भी वर्ड हमने पहले किया है, विजिलेंटिज्म, विजिलेंटी, which brings me back to superheroes. Okay, अगर आपने if you are a fan of DC or Marvel, any of the comic universe, then you must be knowing that vigilantes are different from superheroes, right? How they are different? Vigilantes are ones who uh, punish people विदाउट द हेल्प ऑफ लॉ. ठीक है, मतलब ऐसे सुपर हीरोज जो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि ये इंसान गिल्टी है ऑफ सर्टेन क्राइम और मैं इसको पनिशमेंट दूंगा, इसे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, मैं पनिशमेंट दूंगा. ओके, दैट इज अ विजिलेंटी. सो ग्रीन एरो इज अ विजिलेंटी, राइट? देन यू इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ विजिलेंटी. बैटमैन इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ विजिलेंटी, राइट? सो बेसिकली अगर उस सेंस में अगर आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विजिलेंटिज्म, नाउन TISM हो गया, TISM विजिलेंटिज्म, एक इसको कहते हैं, द मेथड को कहते हैं. ओके, तो नाउन फॉर्म विजिलेंटी इज द पर्सन. ओके, जो विजिलेंटी किसको कहते हैं? जो ये काम करता है उसको विजिलेंटी कहते हैं. विजिलेंटिज्म इज द नाउन फॉर्म. लॉ एनफोर्समेंट अंडरटेकन विदाउट लीगल अथॉरिटी बाय अ सेल्फ अपॉइंटेड ग्रुप ऑफ पीपल. तो इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल. तो लॉ को अपने हाथ में ले लेते हैं ये ग्रुप ऑफ पीपल और ये खुद ही अपना लीगल अथॉरिटी इंपोज करते हैं. ठीक है, खुद से इन्होंने रिस्पॉन्सिबल अपने आप को बना लिया है कि हम
हम उद्धार करेंगे। ठीक है, हम खुद से हम लॉ वॉ पे नहीं भरोसा करेंगे, हम क्या करेंगे, हम खुद से स्टेप्स लेंगे टू डू समथिंग। ठीक है, हम ही है लीगल अथॉरिटी, दैट इज व्हाट इज विजिलेंटिज्म। ओके, another important word, semblance. Okay, semblance is the outward appearance or apparent form of something, especially when the reality is different. Semblance is like apparently, right? Apparently जो हमने किया है पहले, राइट, अपेरेंटली। तो सेम्बलेंस इज बेसिकली जैसा वो दिख रहा है। ओके, कोई चीज जैसी दिख रही है, लेकिन वो अगर सेम्बलेंस तभी यूज करते हैं हम जब दिख तो वैसी रही है लेकिन रियलिटी उससे अलग है। ठीक है, दिख ऐसा रहा है, दिखाया ऐसा जा रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। ओके, तब हम सेम्बलेंस यूज करते हैं। एंड दिस इज अ नाउन फॉर्म। ओके, सो दिस इज अ नाउन फॉर्म। ऑल राइट, then you have succumbed. Okay, the outward semblance का मतलब क्या होता है? The outward appearance or apparent form of something, especially when the reality is different. Okay, तो outward appearance, first impression, not even first impression, बस outward appearance, किसी चीज का बाहरी कैसा दिखाया जा रहा है। ओके, हाउ इज इट अपियरिंग, ओके, फॉर पीपल, एंड कैसा दिखाया जा रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? ओके, कुछ और है। So that is semblance. Succumbed. Succumbed is a verb. Succumbed का मतलब होता है fail to resist pressure, temptation or some other negative force. Succumbed का मतलब क्या होता है? Succumb is the verb form, ed बाद में लगाते हैं for past form. So succumb का मतलब क्या होता है? Fail to resist pressure, temptation or some other negative force. Okay, so he succumbed to the dark side. Okay, that means स्टार वॉर्स रेफरेंस है। अगेन सकम इज बेसिकली अगर आप किसी गलत काम करने जा रहे हो, राइट, एंड आप अपने आप को बहुत रेजिस्ट करने की कोशिश करो कि ये गलत काम मैं ना करूं, लेकिन फाइनली आप गिव अप कर देते हो और कर लेते हो। ओके, सो वो गलत काम कर देते हो। ओके, सो दैट इज सकम। ओके, सकम टू प्रेशर, सकम टू टेम्पटेशन, सकम टू any negative force. Okay, so any negative force, what are negative forces? Pressure, temptation, greed, envy, um, anger. Okay, सो ऑल दीज, अगर कोई भी नेगेटिव चीज के में आप सरेंडर कर देते हो, कि कोई भी नेगेटिव चीज के टेम्पटेशन को आप सरेंडर कर देते हो, कि यू गिव इन टू द टेम्पटेशन। ओके, किसका था? एंगेज ड्यूरिंग, गिव इन टू द टेम्पटेशन, राइट। सो सकम इज बेसिकली दैट, गिव इन टू द टेम्पटेशन। ओके, दैट इज टू सकम। ऑल राइट, और ये वर्ब है, राइट। सो अगर आप फेल कर रहे हैं रेजिस्ट करने के लिए, तो सकम टू समथिंग, सकम टू। ओके, ही सकम टू समथिंग, प्रेपोजिशन क्या लगता है? टू। ऑल राइट, और presumably, okay, presumably is like considerably, presumably पहले assume, presumably, okay, ly लग रहा है, that means definitely ये adverb होगा, right, ly लग रहा है तो ये definitely adverb होगा। So when we say presumably, इसका मतलब होता है used to convey that what is asserted is very likely, though not for certain. Okay, मतलब जो भी हम बोल रहे हैं, okay, जो भी हम बोल रहे हैं presumably ऐसा ही होगा। okay, so that means likely ऐसा ही होगा, लेकिन certainly नहीं कह सकते। okay, so presumably और certainly में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, कि presumably होता है मतलब कि ऐसा होना चाहिए। ओके, ऐसे ही होना चाहिए, लाइकली ऐसे ही होगा। ओके, लेकिन फॉर श्योर नहीं कह सकते। ओके, ओके, फॉर श्योर नहीं कह सकते, दैट इज प्रिज्यूमेबली। माय गॉड, इतना इतनी हंसी वाली चीज तो नहीं है त्रिरंगा, आपने इतना हंस दिया है, पता नहीं क्यों। All right. So the words that we saw over here are culpable, lynching, homicide, nuance, acquitted, vigilantism, semblance, succumb, presumably. Let's look at the sentences quickly. Hi, Roshni.
Hello, G. All right, let's get started with the sentences. All right. Hey, go give him a good luck. Sorry, good kick. I cannot even read negative sentences. That culpable rascal is trying to snatch my purse. Very nice, Ishan. Good job. You are culpable for beating him. Very nice, Ujjwal. Good job. I feel I have been the victim of a lynching. Very nice, Triranga. Good job. You are capable for our classes. For our class is very. Anjali, you are culpable. Okay, culpable. He is liable for culpable homicide. Very nice, Vaishnavi. You can just say he's culpable for homicide. Okay. The judge found my client culpable, but मुझे क्या? I collected my fees. The judge found my client culpable, but मुझे क्या? I collected my fees. Very nice, Triranga. Lynching is a culpable crime. Very nice, Nishita. Sorry, but you are culpable of murder. Very nice, Triranga. I mean Nishita, and then Trirangas. All right. Moving on to my teacher is capable. His beats me. My teacher is culpable of beating me. Okay. My teacher is culpable of beating me. Okay. That means responsible for, blamed for beating me. Okay. Killing one person by another, matlab, killing one person by another मतलब अगर मैं आपको मार डालूं रुचि या आप मुझे मार डालें that is what is it is a homicide okay बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ऑब्वियसली आदित्य homicide की एज क्या लगेगा मैम फॉर एज आदित्य I didn't understand even the homicide detectives was surprised by the level of this crime. Very nice one. Good job, Vaishnavi. He killed his friend, so he had done lynching act. Very nice. So he lynched. He did a lynching act. She nuanced her style. Very nice, Janvi. Good job. It was clear a case of homicide, but still you release that criminal. Ekdam घूसखोर घूसखोर फर्जी जज हो यार त्रिरंगा गुड जॉब नुआंस इज थोड़ा सा चेंजेस अगर कोई भी चीज में थोड़ा सा चेंजेस आता है स्लाइट चेंजेस आता है ओके उसका मीनिंग में स्लाइट चेंज आ रहा है या उसका अपीयरेंस में कैसा दिख रहा है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है या उसके साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा चेंज आ रहा है दैट इज नुआंस्ड ओके Daredevil is a vigilante. Absolutely, Sharma. Correct. I forgot Daredevil. Oh, he's handsome. uh, my friend is acquitted of multiple felonies. Very nice one. Good job. Avengers are vigilantes. No, they're not. No, they are under US government's payroll. After some time, they became under the. Mm, Avengers are not vigilantes. The judge found the man culpable of the crime and sentenced him to life in prison. Very nice, Manisha. I watched her face intently to catch every nuance of expression. Very, very nice, Trivanga. This was very nice. Can you explain nuance again? I explained it again. Aditya, I went to my cousin's apostrophe yes hoga, cousin's marriage with a nuanced dressing sense. Very nice, Aditya. Just cousin में apostrophe लगाना है. When judge found my client was not guilty, he acquitted him. Very nice, Vaishnavi. Good job. Homicide might be a crime, but if you don't listen to me, then you will forget this thing. Very nice, Nishita. You tried your very best this time. I can see your effort that you are trying to put an effort and you're trying to change your sentences, taking care of your sentences. Very nice. There's a comma as well this time. Fascinating, Nishita. Now,
निशिता, कॉमा के पहले देयर इज नो स्पेस, ओके? कॉमा के बाद हमेशा स्पेस होता है. सेम गोज फॉर फुल स्टॉप एज वेल. फुल स्टॉप के पहले नहीं स्पेस होता है, फुल स्टॉप के बाद. सेम गोज फॉर क्वेश्चन मार्क के पहले नहीं स्पेस होता है, क्वेश्चन मार्क के बाद. ओके, वेरी नाइस निशिता, गुड जॉब. Vigilantism is a norm in some areas. Very nice, Aditya. Good job. Manisha, some town found that lynching was the only way to drive away bands of outlaws. Very nice, Manisha. Good job. Indian movies are full of vigilantism. That's why the youth of our country get influenced by them and try to be that kind of person. Very nice, Ria. Good job. Very nice. Janvi, my client got acquitted in case of culpable homicide. Very nice. Good job. Uh, who said that you are acquitted, Triranga? You are liable for eating my momos. Very nice, Nishita. Good job. You used acquitted as well as liable. Good job. Acquitted small होगा. However, acquitted small होगा, Triranga capital होगा. Okay, T capital होगा of Triranga. Right? Name, proper noun. Salman Khan capital again. Anjali. Salman Khan's son. Son is, there won't be an apostrophe over here, Anjali. यहाँ पे apostrophe नहीं होगा. Is acquitted in drug matters. Okay, in drug matters. Anjali, good job, good effort, very nice. uh, सलमान खान का बेटा है. Anyway, I'll return your okay. In politics, things are a semblance. Okay, things are a semblance. Yes, Janvi, that's what I was thinking. Nishita, so sorry, ma'am. आज sentence ज़्यादा नहीं बना पाएंगे actually मेरे दी की बेटी. Very nice, Nishita. Congratulations to your sister. Okay, Vaishnavi. Yesterday Nishita said no one is superior than me. Here I am, vigilantism. Here I am a vigilante. Okay, here I am a vigilante. Ria, very nice, Vaishnavi. Good job. We all try to succumbed नहीं होगा, ed नहीं होगा. We all try to succumb. Simple present में बना रहे हो ना? So we all try to succumb ourselves off. Oh, sorry, to social media. To yes, succumb ourselves to using social media, but still do not. Very nice, Ria. Good job. The National Guards was क्यों होगा? Were होगा ना Himan? Were called out to protect the defendants from lynching during their trial. Very nice one. Good job. He succumbed to clear the CLAT exam. Yes. Very nice, Nishita. Absolutely correct. Good job. She thinks a semblance of anger frightened me. Ha 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 ha. Good job, Truranga. Good job. But again, इतना ज्यादा हंसने वाली बात नहीं थी. He easily gets acquitted from the charges of theft. Very nice, Ria. Good job. Presumably, uh, right judgment must be passed. Very nice, Sharva. In politics, nothing is presumably. In politics, nothing is presumable. Okay, presumable. All right. In this case, Nishita, good job. After a blows there, the COVID-19 succumbs. Aditya, what is a blows there? But after uh, full blown effect, COVID-19 succumbed. Okay, Aditya, um, just throughout my frustrations on her, Aditya, she went to dinner, presumably with her boyfriend. Ooh. Masaledar talks. Very nice, Aditya. Good job. For the one thing needful is not destined to succumb. I think my future is novel writing. In novel writing is very bright.
For the one thing needful is not destined to succumb. क्या लिख दिया आपने त्रिरंगा? मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, ये क्या है? Nice. Ria, reporters of ABC channel nuances news and the telecast it and then telecast it on television. Very nice, Ria. Good job. It's raining, which presumably means that your football match will be cancelled. Very nice, Manisha. Good job. It's raining, which doesn't presumably mean होगा यहाँ पर means नहीं होगा. That our date will be cancelled. Okay, but don't take your umbrella. I have my umbrella. We'll adjust in that one. Viranga, very nice. Good job. The city succumbed after only a short siege. Very nice. Manisha, good job. I couldn't resist myself from hitting Winnie the Pooh's floppy belly and eventually succumbed to the urge to do so. Very nice. Very nice. Ishan, good job. I used to also feel like doing that. Always. The film lacks any semblance of realism. Very nice, Manisha. Good job. Anjali, the servant is killed. Their owner, he had the lynching. The servant was killed in a lynching by his owner. Okay. Uh, Manisha, the High Court acquitted him and criticized, then fell upon the government. And and criticism then fell upon the government. Very nice, Manisha. Good job. My nuanced look at the party made me look different from others. Very nice, Vedika. Good job. Today is your schedule of classes is nuanced change. Um, Today, your classes, your schedule has nuanced. Your class schedules have nuanced. Okay. Okay. So it basically means changed, right? So slight change. Vedika, person performing homicide is culpable of getting hanged. Very nice. Very nice, Vedika. Vaishnavi, now you are culpable to think that that you are superior than me because you are not. Okay, Nishita. I don't know what type of vigilant moron Thanos is. No, he's a very smart one, actually. Ishant, I like Thanos for some reason, because he has got a very solid. Generally, if you see superheroes or villains में एक बहुत ही major difference होता है, right? And that very difference that segregates them from being a superhero and a villain is logic. You know that always you will see that the villains or the nemesis of the hero or the antagonist have a strong reason for whatever they are doing. They always have a certain reason, but heroes don't have a certain reason, very strong reason. They don't have a drive, but villains are always driven by something. So I like villains. Uh, peppery. Peppery is used to describe wines that have nuanced spice flavors. Very nice, Evan. Maza aa gaya. Very nice. Sharva, if you might be studying, then you may know that I am just making sentences. What happened, Sharva? के साथ कुछ हुआ क्या? Shut up. I don't want to live in a society which tolerates vigilantism. I have enough money to spend my entire life in Hotel Taj. And where is Hotel Taj? In the belly of society. Repeat succumb, semblance, and presumably I didn't get it. Okay, Vaishnavi, I will repeat it.
देखो सेम्बलेंस क्या होता है? सेम्बलेंस होता है आउटवर्ड अपीयरेंस, किसी चीज का जैसा वो दिख रहा है लेकिन अंदर कुछ और होता है उसका, ठीक है। जनरली जैसा वो दिख रहा है और रियलिटी उसका कुछ और होता है, ऐसे चीज को सेम्बलेंस कहते हैं। आउटवर्ड अपीयरेंस उसका ऐसा है, या आउटवर्ड अपीयरेंस किसी का ऐसा है, तो दैट इज कॉल्ड सेम्बलेंस। ओके, सकम्ब इज बेसिकली अगर आप किसी चीज में मजबूर हो जाते हैं कि कर लेते हैं आप, ठीक है, कोई भी टेम्पटेशन, बहुत देर से आप रेजिस्ट कर रहे हैं कि चॉकलेट नहीं खाना है, मम्मी ने कहा चॉकलेट नहीं खाना है, ओके, बहुत टाइम तक आपने ये किया कि चॉकलेट नहीं खाना, और चॉकलेट आपके सामने रखा हुआ है, आपने बहुत टाइम तक आपने नहीं खाया क्योंकि मम्मी कह के गई है जब आएगी तभी खाना है, लेकिन फिर आपसे रहा नहीं गया, you succumbed to the temptation of eating the chocolate and you ate it. Okay, so succumb is basically fail to resist. Okay, and presumably is basically अगर ऐसा लगता है, कोई चीज ऐसा प्रतीत होता है, that is presumably. Okay, ऐसा दिखाया जाता है या ऐसा asserted है, लेकिन for sure नहीं कह सकते. Okay, so not certain मतलब ऐसा कन्वे किया जाता है कि यही सही है लेकिन फॉर श्योर नहीं होता। ओके, प्रिज्यूमेबली ऐसा उसने बोला है। ओके, मतलब उसके हिसाब से तो ये सच है लेकिन आई डोंट नो, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। प्रिज्यूमेबली शी सेड दैट शी इज मैड एट हिम। ओके, सो प्रिज्यूमेबली मतलब ऐसा वो कहना चाह रही है कि वो उस पे गुस्सा है, लेकिन क्या सच में है पता नहीं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स, फेटल हमने पहले कर लिया है। आई दिस वर्ड बाय नाउ यू शुड रिमेंबर, फेटल इज एनीथिंग दैट इज कॉजिंग डेथ। ओके, सो कोई भी चीज फेटल होती है तो दैट कॉजेज डेथ। ओके, प्रोसिक्यूट करना मतलब क्या होता है? प्रोसिक्यूट करना मतलब इंस्टीट्यूट और कंडक्ट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी चीज को किसी भी इंस्टीट्यूट या पर्सन, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन को के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग जब चलती है, उसके खिलाफ लीगल अगेंस्ट लिखा हुआ है, उसके खिलाफ जब लीगल प्रोसीडिंग चलती है किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, तो उसको कहते हैं प्रोसिक्यूट करना। ओके, All right, then we have dismal. Dismal का is also an adjective और ये भी हमने पहले कर लिया है. All these words are very very important. Causing a mood of gloom or depression. So dismal is anything that makes you really really sad or depressed. Okay? छी यार क्या हो गया? And you are completely depressed or sad about it कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. Okay, so causing a mood of gloom और डिप्रेशन। ओके, सो डिसमल इज अ अगेन एडजेक्टिव, तो इसके बाद एक नाउन आना चाहिए, फेटल के बाद भी एक नाउन आना चाहिए, राइट? राइट, और फेटल से फेटिलिटीज होती है, राइट? The mob lynching had a lot of fatalities. Okay, fatalities are the uh, people who suffered and died or in the process. Okay, सो फेटल फेटलिटीज। और राइट, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है किसी भी इंसान या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग बैठाई जाती है, उसके अगेंस्ट की जाती है, कंडक्ट की जाती है, तो उसको कहते हैं प्रोसिक्यूट करना किसी को। ओके, conviction. Conviction is a noun which means a formal declaration by the verdict of a jury or the decision of a judge in a court of law that someone is guilty of a criminal offense. तो basically एक formal declaration, एक formal announcement कह लो, एक formal अनाउंसमेंट कह लो, बाय द वर्डिक्ट ऑफ अ जूरी। ओके, किसी जूरी के वर्डिक्ट के बेसिस पे एक अनाउंसमेंट जो की जाती है, और द डिसीजन ऑफ अ जज, या जज का डिसीजन या तो जूरी के डिसीजन पे जो अनाउंसमेंट की जाती है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। तो बेसिकली कोर्ट में अगर किसी के का एक फॉर्मल डिक्लेरेशन किया जाता है दैट दिस पर्सन is found guilty of a crime. Okay, so that is a conviction. Okay, so convict करना मतलब किसी को बताना, कोर्ट ऑफ लॉ में ये बोलना कि बाय द जज या जूरी कि वर्डिक्ट ये सुनाना, फाइनल वर्डिक्ट ये सुनाना कि दिस पर्सन इज गिल्टी। ओके, दैट इज कन्विक्टेड। ओके, सो ही वाज कन्विक्टेड ऑफ द क्राइम, एंड द ऑपोजिट इज, यहां पर हमने देखा acquitted. Okay, convicted and acquitted. Okay, so acquitted is free someone from by saying not guilty. Okay, so acquitted is not guilty, convicted is guilty. Okay, all right.
असेलेंट इज अ नाउन जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो फिजिकली अटैक करता है किसी और को, ओके। असेलेंट इज द वन हु अटैक्स, ओके, जो अटैक करता है किसी और पे, दैट पर्सन इज कॉल्ड द असेलेंट, ओके। असेलेंट इज अ नाउन, ऑलराइट। अग्रीव्ड ग्रीफ से आया है, राइट। अग्रीव्ड इज फीलिंग रिजेंटमेंट एट हैविंग बीन अनफेयरली ट्रीटेड, ओके। अगर आपके अंदर नफरत भर गई है, आपके अंदर गुस्सा भर गया है, आपके अंदर नफरत भर गई है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है उसको लेकर, तो यू आर अग्रीव्ड, ओके। सो अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आप उसके बारे में बेसिकली आप यू हैव अ बैड फीलिंग अबाउट इट कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, या ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ ऐसा, दिस इज नॉट राइट और दिस इज नॉट हाउ पीपल शुड बी ट्रीटेड, ये इंसानियत के नाम पे कलंक है, that means you are aggrieved, okay। So adjective है aggrieved, all right। Then we have deprecate. Deprecate is express disapproval of. Deprecate का मतलब क्या होता है? Express disapproval of. He deprecated his he deprecated the entire policy, okay। He expressed that he is disapproving the entire policy, मतलब उसे नहीं अच्छा लगा, okay। he मना कर दिया उसने साफ, मेरे साइड से तो नहीं नहीं ये सही चीज नहीं, ओके। सो एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, की डेप्रिकेट करना मतलब किसी चीज के लिए ना बोल देना या अप्रूवल नहीं देना, ओके। सो दैट इज टू डेप्रिकेट, ओके। डेप्रिकेट वर्ब है, न्यू वर्ड, okay। And then we have another important new word, that is bigotry, okay। Bigotry is obstinate or unreasonable attachment to a belief, opinion, or faction, in particular prejudice against a person or people on the basis of their membership of a particular group, okay। So basically bigotry क्या है कि देखो, अगर किसी भी पर्सन का किसी भी चीज से, किसी भी बिलीफ से या किसी भी ओपिनियन से, बिलीफ क्या होता है? समथिंग दैट यू कंसिडर टू बी ट्रू, ओके। बिलीफ इज समथिंग दैट यू कंसिडर टू बी ट्रू, ओके। जैसे आप भगवान पे विश्वास रखते हैं, इज अ बिलीफ, ओके। सो बिलीफ या ओपिनियन या फैक्शन, ओके। अनरीजनेबल अटैचमेंट टू, किसी भी या एक बिलीफ से या एक ओपिनियन से या एक कोई सर्टेन फैक्शन, एज इन कोई एक फैक्टर या कोई एक सर्टेन सेक्शन से, ओके। आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, ओके। अनरीजनेबल अटैचमेंट है, इतना अटैचमेंट होना नहीं चाहिए था लेकिन आप भयंकर ही अटैच्ड हो, ठीक है। क्यों? इन अ पर्टिकुलर प्रेजुडिस अगेंस्ट अ पर्सन or the basis of their membership of a particular group, okay। तो in particular prejudice against a person, okay। So okay, let's just consider it till here, okay। यहीं तक consider कर लो, okay। So obstinate or unreasonable attachment to a belief, opinion or faction, okay। अब इससे ज्यादा इसको complicate नहीं करते हैं, leave this part out for now, okay। In particular prejudice against a person, prejudice का मतलब क्या होता है? What is the meaning of prejudice? Can anyone tell me what is the meaning of prejudice? Basis of their membership of a particular group, ठीक है। तो leave this, just let this go, okay। Probably will explain it again in a different way। Bigotry बस समझ लो कि अगर आपके पास unreasonable attachment है किसी belief या opinion या faction पे, तो unreasonable attachment मतलब इतना होना नहीं चाहिए था, reasonable attachment is still understood, but unreasonable attachment है या obstinate attachment है कि नहीं नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, यही है सही है, ये सही है, यही सही, okay। That is bigotry, okay। प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है? इन्फ्लिक्टिंग और इंटेंडेड एज पनिशमेंट, ओके। प्यूनिटिव इज पनिशमेंट, ऑलराइट। ये हमने पहले भी किया है, प्यूनिटिव बहुत बार किया है।
uh, पक्षपाती is prejudice. Yes, prejudice is based on, let's say कि आप एक certain environment में पले बड़े हो. For example, let's say आपको एक 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 इंसान है जो छोटा था तो उसे ये सिखाया गया, ओके, कि लेट्स से सिखाया गया कि भगवान सिर्फ उसके घर में, ओके, भगवान सिर्फ उसके घर में, ओके, दिस इज व्हाट वाज टॉट टू हिम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है, यही सिखाया गया, इसी इसी पे पूरा उनका रिलीजियस वैल्यूज और सब कुछ उसे यही सिखाया गया. Now, if this person goes and talks to other people and the other people are going to temple and worshipping, he says something like, टेम्पल में भगवान नहीं है, ओके, या मस्जिद में भगवान नहीं है, या चर्च में भगवान नहीं है, भगवान मेरे घर में. दैट इज हिम स्पीकिंग विथ प्रेजुडिस, ओके, प्रेजुडिस मतलब उसके अपने ओपिनियन, अपनी जैसा वो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे कुछ एक बिलीव बना लेता है, ओके. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज रीजनेबल, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट रीजनेबल, ओके, प्रेजुडिस इज नॉट रीजनेबल. आप अपने ओपिनियन के बेसिस पे आप अपने खुद से एक एक सर्टेन सख्त ओपिनियन बना लेते हो कि यही सही है और यही है, ओके, दैट इज अ प्रेजुडिस, ओके. नॉट नेसेसरी बेस्ड ऑन रैशनल रीजनिंग, जरूरी नहीं कोई रैशनैलिटी होती है उसमें, दैट इज प्रेजुडिस. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैं बता रही हूँ, ओके. Let's look at the sentences and then move on to the hmm. It's raining, it's raining. मुझे वो बोलता है, निशिता, आई थिंक यू आर हियर टू स्टडी. Everyone is here to study and have a little fun. It's okay. Uh, However you study not necessarily means that you have to download information like a robot, right? हमने ये passage भी देखा है, right? Studying does not necessarily mean that you have to download information like a robot. Studying can be done in a fun way, and this is what we are doing. Okay? Uh, ठीक है निशिता. Triranga, that society is Bablu Dham Society near Gokul Dham Society. आओ कभी हवेली पे and witness the semblance it holds. Very nice, Ishant. Very nice. Very nice. Okay. Sharban, Smriti, he succumbed to the gunshots, presumably dead. He succumbed to the gunshot and is presumably dead. Okay, presumably dead. All right, Smriti, good job. Semblance behavior of diabolical friend. Yes, but what is the sentence? And diabolical is one of my favorite words. Did you know? Diabolical, serendipity, these are my favorite words. So diabolical is a nice word, but Aditya does not make a sentence over here, okay? When she don't attend my class, that's the reason for fatalities. That's the reason for fatalities, Nishita. Okay, it is the second fatal shark attack that took place in Bondi Beach. Very nice, Sivan. Good job. Trivanga, even moderate amount of the drug can be fatal, but believe you will feel that you are in paradise. Trivanga, good job. Sometimes I feel dismal during the preparation of CLAT. Very nice, Ria, and it is natural to feel that way. Everybody does at certain point of time. ठीक है? In court, prosecute
is also available. I'm thinking to use it. Prosecution is also available, okay? Is also on the table, okay? In court, prosecution is also on the table. I'm thinking of using it. All right. The jury has convicted my friend under terrorist act. Very nice, Heaven. Good job. Nothing can make me dismal except maths. Very nice, Nishita. Good job. Ishant, after putting in all the effort to bake cookies, they ended up getting burned. Now, how am I supposed to poison someone? My plan is completely dismal now. You can taste the cookies, Ishant. See if they are still edible. Okay, Ria, he should be prosecuted for messing up the whole plan. Very nice, Ria, good job. We'll continue to prosecute the war to the end. We raise your hand. So raise your hand in if you are interested for the Ludo war. I am. And don't forget you'll face me as your opponent. Very nice, Ranga. Good job. Yesterday, I convicted that Triranga, you are liable for my momos. Yesterday, I convicted Triranga of being liable for my momos. Okay, very nice, Nishita. He is doing an assailant act. Okay, he is doing an आना चाहिए, right? A से start हो रहा है तो an assailant act on his wife. Okay, not her wife, his wife. Aditya, I deprecated a nuanced fashion by Priyanka Chopra. Very nice. Very nice, Aditya. Good job. I feel aggrieved when when all my relatives give money to my brother. I know, Ria. I feel bad too. um, Last year's result were fairly dismal, but did you see or not this year's result? Very nice results. This year's result. Very nice, Sriranga. Good job. Uh, Shavan tried होना चाहिए, tried to be an assailant but failed. Very nice. Aditya, she rejected me and it was dismal for me, okay? It was dismal for me. Triranga, no. I deprecated for make Triranga free. I deprecated um, the fact the fact that Triranga was free. Okay, was free. Okay, चप्पल उल्टी रखोगे तो लड़ाई हो जाएगी. This is bigotry. Okay, bigotry, but you're not taking any like bigotry has to be a huge issue, right? It has to be a huge issue. So chappal ulta karna is just a superstition, okay? It's not bigotry. Uh, Photographs taken by roadside cameras will soon be enough to prosecute drivers for speeding. Very nice, Himan. Good job. I'm a bigot, okay, towards my food. I'm a bigot towards my food, okay? Ria, a murder is an assailant. A murderer is an assailant. Very nice, Vedika. Simple as that. He is liable for fatalities. He's liable to fatalities, okay? Vaishnavi, Smriti, the assailant, was convicted of the charges which aggrieved the plaintiff, but deprecation was evident on the assailant's face. Very nice, Smriti Thakur. Good job. A huge clap for you. It doesn't seem that huge, but it is huge coming from my side. Good job, Smriti. Good job. His bigotry towards gambling. What about it? Aditya, आप complete ही नहीं कर रहे sentences. You're just giving me Google answers. What is this, Aditya? I'm not wild and deprecated. Okay, I'm not wild and deprecated. Not I यहाँ पर नहीं आएगा. I'm not wild and deprecated.
It's seriously once again, it's serious. Once again, I remind you, I am not wild. Okay? Okay, Tiranga, you're not wild. Nobody is accusing you of being wild. Other party goers rescued the injured man from his assailant. Very nice, Manisha. Good job. Yesterday I gave a mock and I got myself dismal. I I became dismal, okay? I became dismal after seeing marks, okay? The weather of Delhi made me feel dismal. Very nice, Vedika. Good job. Manisha, I strongly deprecate the use of violence by the students. Very nice. Ishant, now deprecating my Omni van kidnapping plan of ma'am. Uh, Can't catch catch up to her during morning jogs. Now, deprecating my Omni van kidnapping plan of ma'am. Very nice. Very nice, Ishant. It's a very nice statement. But Ishant, let me tell you, if I am running and if someone is trying to catch me, I will definitely be caught. I don't like running. I don't know why people run. I don't know. I find it an activity that is no longer required in this world, but people still find it somehow thrilling. I would never run it if I never have to. That's how much I hate running. Anyway, Smriti, he succumbed to the bullet, and this time it proved to be fatal to the deadliest sniper himself. Very nice, Smriti. Good job. Sometimes I feel that I have been aggrieved by my school students. Very nice, Vedika. Good job. Police have decided. Police has decided not to prosecute because the evidence is not strong enough. Okay, a police has collective noun. Nowadays, cardiac attacks have been fatal to human life. Very nice, Vedika. CGI convicted that accused is liable for attempt to murder. Very nice, Vaishnavi. Manisha, the singer, gave a dismal performance of some old song. Very nice, Manisha. Good job. When her assailant is released and rapes again, her only recourse is yet again violent revenge. And this time I strongly supported her with my boys. Very nice, Trina. Good job. No problem, Vaishnavi. Manisha, the High Court later quashed, wow, nice, quashed, good job. Quashed his conviction for murder. Very nice. Quashed is generally used अगर कोई भी conviction को कुचल दिया जाता है तो legal terms में हम quash use करते हैं. Very nice. Smriti, his bigot opinion caused his father dismally, okay, caused his father or dismal fatalities, okay, and later it proved to be fatal to his father, okay, so dismal fatalities, okay, or caused his father um heartache dismally, okay, you can say that as well. Vedika, I have been convicted for being cute by my classmates. Oh, Vedika, I'm sure. Nice. Vedika cute hai. Manisha, the villagers felt deeply aggrieved by the closing of the railway station. And I really like people when they compliment themselves, okay? Instead of talking about your flaws, which we generally do in our teenage, we are trying to find out what are the flaws कि हम क्या नहीं कर सकते, क्या क्या काम नहीं कर सकते. But it is very good. It will boost your confidence if you talk good things about yourself. Like see Triranga, see Vedika, they always try to talk good things about themselves, like they are badass, like they are this and that. Okay, so you should be talking like that about yourself. Okay, don't be too harsh on yourself, everyone, and talk good things about yourself. Very nice, Vedika. I really liked it. The villagers felt deeply aggrieved by closing of the railway station. Very nice, Manisha.
Teach your students to recognize bigotry. Very nice, Trilanga, absolutely, and not be a part of it. If you can't call me to teach your children and arrange some breakfast also with an espresso, if you want to call me to teach your children, arrange some breakfast with an espresso. Turanga, high flying teacher. He won a drug deal led to fatal shooting in downtown LA. Very nice, Hivan. Good job. I was feeling aggrieved after seeing poor children on footpath. Very nice, Vaishnavi. Good job. None of my plan is working well today. Yeah, I must say, Shant. All right, as a principal, I'm expected to take punitive steps against that student, but how can I take punitive steps on my own son? Uh-oh. I think now you got cleared, you got a clear idea who is that student. Okay, Triranga, good job. Espresso is bitter coffee, just concentrated form of coffee, just coffee. Okay. All right, so moving on, हमने कौन कितने सारे words किए? Culpable, lynching, homicide, nuanced, acquitted, vigilantism, semblance, succumbed, presumably, fatal, prosecute, dismal, conviction, assailant, aggrieved, deprecate, bigotry, and punitive. These are the words that we did. Ugh, what happened here? Anyway, there's a huge price drop alert, and this has been extended limited period तक ये offer है. You can save 50% plus 1 month free extension if you use my code Vaishnavi 10. Okay, it is supposed to be like this, not like this. Vaishnavi 10 is my code. If you use my code, you can save up to 50% off and get 1 month free extension. This is how. Okay, again my code is Vaishnavi 10. I ओके सो 6 months plus 1 month एक्सटेंशन अगर आपको चाहिए तो आपको मिल रहा है 28,000 में एंड यू सेविंग अप टू 13 नॉट अप टू 13,800 यू विल बी सेविंग सो दिस हैज गॉट एक्सटेंडेड ये जो आपका महा सेविंग पीरियड चल रहा था दिस हैज गॉट एक्सटेंडेड सो यू कैन स्टिल यूज माय कोड वैष्णवी 10 टू गेट अप टू 50% ऑफ नाउ ऑल इंडिया क्लैट फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट 4th June को आने वाला है 2 बजे so again you have a chance of winning up to 1.25 crore worth of scholarship so enroll yourself now 4th June do not forget now kickstart your CLAT preparation with Unacademy where you can get 10 sectional mocks 10 full length mocks and this will be delivered right at your doorstep and this will be available with all iconic and 9 month plus and above plus subscription जून से डिलीवरीज स्टार्ट हो रही है सो सब्सक्राइब टुडे नाउ दिस इज द मे मंथ का कैलेंडर आई होप यू आर गिविंग ऑल द टेस्ट एंड making sure that you are giving all the tests of this month okay and next month as well mock tests are very very important so make sure that you are strictly giving at least one mock per week. All right, Level Up is a foundational batch for CLAT, AILET, MHCET, LSAT, and SLAT. I'm taking English language in this batch, so if you want to enroll yourself, enroll now. Use my code Vaishnavi10 where you will get up to 50% off. And this has started from May 18th. अब May 4th से एक batch start हुआ है, that is Warriors. Again, my code is Vaishnavi10. You can enroll yourself in this batch as well because again, if you like my English classes, then you can enroll yourself in any of these batches. I will be taking English language in these batches by using my code Vaishnavi10. All right, and Crack CUET PG Law ULLB in 30 days is an intensive course for ULLB, and this has started from 27th April, so enroll yourself now. All right, Mob and Justice. This is the editorial highlighters out, everyone. Sabko apna highlighters nikal lo and let's get to reading, okay? Everyone, attention over here now. We are getting started with the editorial today, okay? We are getting started with the editorial today. Mm, now, Mob and Justice is what the editorial is. Alvar verdict
flags need for stern steps to ensure justice in lynching case. तो अलवर verdict flags need, मतलब flag कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, हमें point out कर रहा है कि ये जो अलवर वाला जो verdict हुआ है इससे हमें क्या need दिख रही है, ये point out हो रही है need कि हमें stern steps, बहुत ही severe steps, strict steps लेने हैं to ensure justice, सारे lynching cases में justice मिले. ये हो गया हमारा आज का conclusion. All right, so let's get started with the main idea of the passage. The thin line between culpable homicide and murder under Indian penal law is a subject of endless analysis, but it is not easy to accept this nuanced distinction in a case of mob lynching. Okay, so basically this is the main idea. Okay, author क्या बोल रहा है कि बहुत बहुत कम लाइन है, ओके, बहुत थिन लाइन है, बहुत पतली सी लाइन है किस चीज के बीच में, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में अंडर इंडियन पीनल लॉ के अंदर में. और इसके ऊपर बहुत एनालिसिस हुआ है, एंडलेस एनालिसिस हुआ है, लेकिन इट इज नॉट इजी. और लेकिन ये एक्सेप्ट कर लेना कि ये जो डिस्टिंक्शन है, ये मॉब लिंचिंग के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये एक्सेप्ट कर लेना बहुत दिक्कत वाली बात है, नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता, ये आसान नहीं है. ओके, सो दिस इज द मेन आइडिया, दिस इज व्हाट द ऑथर इज गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट. ओके, अब इसी के बारे में इंसिडेंट्स बताएगा कि व्हाट इज द इंसिडेंट. विजय विश्व. Okay. A session court in Alwar district of Rajasthan has sentenced 4 men to a prison term of 7 years for the lynching of a Muslim dairy farmer in July 2018. Okay, तो बेसिकली ये इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. अलवर डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है, 4 लोगों को 7 साल की सजा मिली है. किस केस में, लिंचिंग ऑफ अ मुस्लिम डेयरी फार्मर के केस में. ओके, एक डेयरी फार्मर, मुस्लिम डेयरी फार्मर के केस में जुलाई 2018 में. हाउएवर, सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ओवर हियर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हाउएवर द ऑथर इज सेइंग, दैट मींस यहां पर एक डिफरेंस है. इट एक्विटेड नवल किशोर, a Vishwa Hindu Parishad functionary, for want of sufficient evidence. Okay, for want of sufficient, acquit कर दिया, मतलब क्या कर दिया, उसको नवल किशोर को क्या कर दिया, फ्री कर दिया. राइट, ही वॉज एक्विटेड. क्या बोल के, क्या रीजन क्या दिया, फॉर want of sufficient evidence, मतलब sufficient evidence नहीं था उसके अगेंस्ट. ओके, all right, so if one recall, okay, now this is author speaking, if one recall the acquittal of all those tried for the 2017 murder of Pehlu Khan, who was also a victim of cow vigilantism, there is a semblance of justice for Rakhbar Khan, 31, who was attacked by a mob while transporting 2 cows along with her friend near Lalavandi village in Alwar. Okay, so basically क्या बोल रहा ऑथर कि यहाँ पर अगर आप ट्राई कर रहे हो रिमेम्बर करने का, रिकॉल, वी सॉ द वर्ड येस्टरडे इटसेल्फ, रिकॉल करना, मतलब अगर आप ये ध्यान में लाने की कोशिश करो, ये जो 2017 वाला जो केस था पहलू खान वाला, उसमें क्या हुआ था, उसमें भी पहलू खान वाज आल्सो विक्टिम ऑफ काउ विजिलेंटिज्म. ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा जस्टिस में डिफरेंस दिख रहा है, सेम्बलेंस ऑफ जस्टिस दिख रहा है फॉर रखबर खान. ओके, रखबर खान के लिए डिफरेंस दिख रहा है, जिसको अटैक किया था मॉब ने जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था 2 गाय को अपने फ्रेंड के साथ. ओके, नाउ दिस इज बेसिकली समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली स्किम. ओके, ऑल दिस इज समथिंग दैट यू कैन आराम से स्किम. ओके, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज not important, this is something that you do not have to pay attention while reading. Okay, the police had found Rakbar Khan with serious injuries to which he succumbed later, presumably due to delay in taking him for medical treatment. Okay, तो अब क्या बता रहा है कि रकबर खान को पुलिस ने पाया और उसके बाद फिर लेकिन उसका इंजरीज जो था वो सीरियस हो गया था, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था. और
क्योंकि उसको मेडिकल अटेंशन या मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिला। इफ वन टेक्स इन टू अकाउंट, नाउ द ऑथर इज टॉकिंग, अब यहां तक ये पूरा इंसिडेंस बताया ऑथर ने, अब बता रहा है कि अगर हम ये इस चीज को अकाउंट में ले कि the number of attacks, some of them fatal, involving so-called cow protection gang in various states is in recent years, the record of the criminal justice system is successfully prosecuting those involved in such incidents is quite dismal. अगर हम यही ऐसे वाले केसेस देखें, जो ये काउ विजिलेंटी वाले केसेस देखें, या जो काउ प्रोटेक्शन गैंग बन गई है बहुत सारे स्टेट्स में, ये जितने भी अटैक्स है ऐसे देखो, इन सब में, इन सारे इंसिडेंसेस में criminal justice system in successfully prosecute the record of the criminal justice system, और इस इन सारे केसेस के criminal justice system के records देखोगे तो successfully prosecute those involved in such incidents is quite dismal, कि successfully prosecute कर दिया जो जो involved थे इसमें, वो बहुत कम है, वो बहुत ही डिप्रेसिंग है अगर इनके स्कोर्स देखोगे तो, ठीक है, कि कितने लोगों को सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट कर दिया जो ये काउ प्रोटेक्शन गैंग बनाए हैं, ओके। In this backdrop, the fact that the police in Alwar managed to obtain a conviction is noteworthy. और अगर हम इसी फैक्ट को हम बैकग्राउंड में रख के देखें तो अलवर में पुलिस ने मैनेज कर लिया, क्या कन्विक्शन मैनेज कर लिया, ऑब्टेन करने का, कि कन्विक्शन ऑब्टेन करने का मैनेज कर लिया, कि उनको प्रोसिक्यूट कर दिया, ओके, एंड कन्विक्शन भी मिल गया। ये बहुत वाहवाही वाली बात है, ओके, इज समथिंग दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है, बहुत मुश्किल है। हाउएवर दैट the assailants were found guilty only of culpable homicide, not amounting to murder or and wrongful restraint, does raise some serious concern. लेकिन ये तो ठीक है कि उन्होंने ऐसे केसेस में जहां किसी को इंसाफ नहीं, बहुत कम इंसाफ मिलता है, उसमें अलवर के पुलिस स्टेशन ने मैनेज कर, अलवर के पुलिस ने मैनेज कर लिया कि उनका कन्विक्शन करने का, दैट इज समथिंग दैट इज नोट वर्दी। लेकिन ऑथर बोल रहा है कि हाउएवर असेलेंट्स जो थे, जो फाउंड गिल्टी, उनको किस चीज के लिए, उनको क्या चार्जेस पे गिल्टी माना गया, कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी माना गया, ओके, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंस, ओके। तो इसमें ना ही इनको मर्डर के लिए गिल्टी माना गया, ना ही रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के लिए गिल्टी माना गया, ये कंसर्न वाली बात है, ओके। अ कन्विक्शन फॉर मर्डर वुड हैव एंटेल्ड एटलीस्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और अगर एक कन्विक्शन होता मर्डर के लिए तो उसमें एटलीस्ट इनको लाइफ सेंटेंस मिलती, ओके। Rakbar Khan's family is justly aggrieved both over the acquittal of one suspect, who they believe was the main accused, and the 7-year prison terms. तो रकबर खान की फैमिली जो है वो बहुत डिसअपॉइंटेड है इन दोनों वर्डिक्ट से, ओके, कि एक तो वो जो एक अक्विटल मिल गया एक सस्पेक्ट को, जिसको ये कंसिडर कर रहे हैं कि सबसे मेन वही था, वही सस्पेक्ट था, और ये जो 7-year प्रिजन मिला, इसके लिए भी दे आर नॉट रियली हैप्पी, ओके। द पुलिस रिलाइड ऑन सम टेलीफोन कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पुलिस रिलाइड on some telephone conversation between the acquitted VHP leader and the assailants to rope him in as a key suspect. तो पुलिस किस चीज पे रिलाई की, एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन को दिखाई एज अ प्रूफ, ये जो अक्विटेड VHS लीडर, VHP लीडर था, एंड द असेलेंट, और जो असेलेंट थे उनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन उन्होंने बेसिकली एज दिया था कि दिस, ताकि उसको अंदर ले सके, ओके, टू रोप इन द असेलेंट, ओके, ताकि उसे कन्विक्शन मिले, ओके। However, the court did not consider this adequate proof, लेकिन कोर्ट ने इसको adequate proof नहीं माना, ओके, तो कोर्ट ने इसको adequate proof नहीं माना, so this is important, right? Now moving on to the final saying, while deciding the fatal attack did not amount to murder, the trial court has concluded that the assailant neither intended to cause death nor knew that their assault may cause death. तो basically उनको क्या बोला गया उनका जो फेटल अटैक अगर देखा जाए जिसकी वजह से मर्डर हो गया, तो ट्रायल कोर्ट क्या कंक्लूड किया कि असेलेंट्स जो थे
उन्होंने ना ही इंटेंशन, ये उनका इंटेंशन था कि वो मार दे उसे, या उनको पता भी नहीं था कि ये असॉल्ट जो वो कर रहे हैं उसकी वजह से इंसान मर जाएगा. The prosecution is likely to take up both the inadequate sentences awarded to the four and the acquittal of one on appeal. तो prosecution इसको appeal में लेने लेगी. Okay. Organized cow vigilantism poses a major threat to the safety and security of minorities as well as to the maintenance of the rule of law. तो ये जो ऑर्गेनाइज काउ विजिलेंटिज्म हो रहा है, इसकी वजह से दो सेक्टर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है. ये तो माइनॉरिटीज का सेफ्टी और प्रोटेक्शन में बहुत दिक्कत, थ्रेट पोज कर रही है, और दूसरी जगह कहाँ थ्रेट पोज कर रही है, लॉ को का रूल मेंटेनेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ में भी एक थ्रेट पोज कर रही है. ये दोनों जगह ये काउ विजिलेंटिज्म. Okay, despite the Supreme Court deprecating the bigotry and hate propaganda that underline such activities, incident of sectarian violence and vigilantism seem to go on. Okay, ऑथर क्या बोल रहा है कि कोर्ट तो इसको बोल रही है कि ये बहुत गंदी चीज है, कोर्ट इसकी निंदा कर रही है. ओके, इस पूरे चीज की, लेकिन भी ये सेक्टेरियन वायलेंस और विजिलेंटिज्म ये चलता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलता जा रहा है. बोथ प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव मेजर्स, ओके, प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेना होगा और पनिशिंग मेजर्स भी लेना होगा, आर नीडेड टू अरेस्ट द ट्रेंड. तो इस ट्रेंड को खत्म करने के लिए, यहीं पर रोकने के लिए दोनों प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे. एंड वन कैन नॉट एम्फसाइज enough the need for efficient investigation and prosecution. और इस पे और जोर नहीं डाला जा सकता कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि बोथ दोनों एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस पे, और प्रोसिक्यूशन भी होना चाहिए. सो दिस बिकम्स द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, और ये यहाँ तक कंक्लूजन भी है, बट दिस इज स्टिल हियर, इट इज कंक्लूडिंग दिस डिस्कशन. एंड देन द ऑथर ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ से प्रॉब्लम बता रहा है ऑथर, यहाँ से प्रॉब्लम बता रहा है, और यहाँ फाइनली कंक्लूजन दे रहा है. ओके, ऑलराइट, सो दिस इज द Jai Shri Ram to the author. Nikhil, what is that supposed to mean? अगर आप खुद, ओके, आप लॉयर्स बनने के लिए पढ़ रहे हैं और आप खुद ऐसे स्टेटमेंट्स दोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? निखिल, कैसे काम चलेगा? मैम, आप कोरिया से आए हो? हाँ, हाँ निखिल, मैं कोरिया से आई हूँ. और कुछ? Tone is concerned and the vigilantism situation is becoming increasingly concerning nowadays. Concerned, okay. What else? The author is also criticizing, right? Tone critical भी author criticize कर रहा है ये decision को, right? Right? So critical would be the actual tone, और concerned हो सकता है. Yes. Triranga, absolutely. एक तरफा ऑथर, बट हाउ द ऑथर इज सेइंग दैट कि इसकी वजह से सही इंसाफ नहीं मिल रहा. ओके, ये सब जो हो रहा है इसमें भी सही इंसाफ नहीं मिल पा रहा है लोगों को, कि बहुत कम है ऐसे केसेस जिसमें सही इंसाफ मिल रहा है, ऐसे केसेस में, राइट? तो इसीलिए ऑथर बोल रहा है कि सही इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों को, सबको मिलना चाहिए, राइट? और ये प्रॉब्लम बन जाएगा माइनॉरिटीज के लिए. सो ऑथर एक तरफा नहीं है, ऑथर सही बोल रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज द केस, ऑथर सही बोल रहा है फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द अकाउंट दैट ही हैज गिवन. सो दैट इज इट फॉर टुडे, बॉयज एंड गर्ल्स. बट ग्रेट. Whatever floats your boat, Nikhil, whatever you want to do in life. From my side, that's not a good sign of a lawyer or future lawyer aspirant. Okay. All right. Having extreme opinions is not something that is expected of you. All right. So, no extreme opinions, everyone.
एंड इफ यू हैव एक्सट्रीम ओपिनियंस दैट मीन्स यू आर नॉट रीडिंग इनफ, ठीक है? अगर आपके पास एक्सट्रीम ओपिनियंस अभी भी है, ठीक है, और अभी भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली किसी चीज पे विश्वास कर रहे हैं, तो आप सही से पढ़ नहीं रहे हैं, बिकॉज नॉलेज इज सपोज टू मेक यू humble. All right, that's it for today. Thank you everyone. Bye bye. Sayonara. Sayonara.